तो कितने लोग मंदिर में पहले बार आ रहे हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में? तो आप सबने दर्शन लिया मंदिर का? अच्छा, ठीक है। तो स्पेशली डेंटल मेडिकल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर विवेक और डॉक्टर रूपाली, इनका हार्दिक स्वागत है। तो अभी थोड़ी देर में मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा 12 बजे। अभी 12 हो गया, अभी 12:10 से थोड़ी देर तक कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद कई स्पीकर्स यहाँ पे आएंगे, वो अपने अपने टॉपिक में बात करेंगे। ये प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा और 2 बजे के बाद सबके लिए प्रसादम है, महाप्रसादम फीस्ट है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में हम 5 मिनट में कीर्तन स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे विनंती है कि ये जो प्रोग्राम है तो आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मोबाइल अगर आप साइलेंट मोड में रख सकते हो तो अच्छा है। तो क्योंकि ये प्रोग्राम 2 घंटे का है तो हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम जो आप सबको अच्छा लगेगा। तो आप सब लोग इसमें अच्छा से पार्टिसिपेट करो। कोई क्वेश्चंस है, कोई भी कुछ पूछना है तो आप स्पीकर को पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। वी कैन स्टार्ट द कीर्तन। हु इज गोइंग टू लीड द कीर्तन? प्लीज। तो अभी कीर्तन होगा, तो सबसे विनंती है कि आप ये कीर्तन में पार्टिसिपेट करें। तो जब ये महामंत्र गाएंगे तो आप सब लोग इसके पीछे महामंत्र गा सकते हो 10 मिनट के लिए, फिर मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Fast. Subhadra, you could have done fast. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो डॉक्टर विवेक और डॉक्टर रूपाली, मैं इनसे निम्र विनंती करता हूं कि आप कृपया स्टेज में आके बैठ जाइए, और जितने भी स्पीकर्स हैं तो उनसे भी विनंती है कि आप स्टेज में आके बैठ जाइए प्लीज़। तीर्थेश्वरी, प्लीज़ कम। सो व्हाट इज द प्रोग्राम नाउ? After the sitting down, then discussing is also here now. Okay, only this one is. Then after the sitting down, then the speaker starts. Okay, so I welcome this people. This person will come. We will be from the shop. Okay. And after that, the speaker starts. It is for all. Okay. सो यहाँ पे डेंटल मेडिकल कॉलेज के राउंड अबाउट 80 स्टूडेंट्स आए हैं डॉक्टर विवेक और डॉक्टर रूपाली के साथ, और पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज से राउंड अबाउट 65 स्टूडेंट्स आए हैं डॉक्टर मुनीश कुमार और अजमेरी खान इनके साथ। इनका भी स्वागत है प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। तो so Dr. Munesh Kumar and Ajmeri Khan, they are here in the hall. Okay, they will be coming. I think you are going to start. You are going to start? Okay. Yeah, I think you are starting. So आज का कार्यक्रम का पहला टॉपिक है संबंध, और स्पीकर है तीर्थेश्वरी राधिका। तो तीर्थेश्वरी राधिका से हम विनंती करते हैं कि वो स्टेज में आए। ओके, यू कैन टॉक। यू विल बी देयर और यू विल बी हियर? आई डोंट नो। हियर ओनली? ओके। Play the Sambandha mixed relationship, right? In English. Yeah, English. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्ण बलराम मंदिर में। और लाइक आई कैन सी यू ऑल आर डूइंग योर डॉक्टरेट, सो मस्ट बी दोज हु आर द सीकर्स ऑफ नॉलेज, राइट? क्योंकि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तभी एक आप अच्छा एम रख सकते हैं अपने जीवन के लिए। सो जो नॉर्मली समझा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अध्ययन में बहुत अच्छे हैं और उनके अंदर जानने की इच्छा है, उत्सुकता है। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आप सबके लिए, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जो इनिशियल टॉपिक है वो है संबंधा, द रिलेशनशिप। एंड आई थिंक you know, from the very beginning of our life till we die, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी किसी न किसी संबंध में जीते हैं, राइट और रॉन्ग? यस। संबंध का क्या अर्थ है? ये उसका इंग्लिश में आप बता रहे हैं, रिलेशनशिप। संबंध का अर्थ है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से या किसी भी जीवात्मा से इस प्रकार से जुड़े रहना कि आपको उसके प्रति एक आस रहती है और उसको आपके प्रति एक आस रहती है। रिलेशनशिप टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। टेम्परेरी हम रोज देखते हैं। कॉलेज लाइफ इज़ फुल ऑफ टेम्परेरी रिलेशनशिप्स, राइट? गुड फ्रेंड्स, यू नो, टेम्परेरी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। बट देन वी रियली सीक समथिंग विच विल लास्ट लाइफ आफ्टर लाइफ। एक जन्म से लेकर आने वाले जन्म तक
कि अगर कोई हमारे साथी हैं या साथी बन सकते हैं तो वो केवल भगवान श्री हरि श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए तो उन्होंने सिर्फ विरक्ति नहीं सिखाई, उन्होंने हमें संबंधों को जीना भी सिखाया। एक दोस्त कैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा, अर्जुन जैसा। एक माँ कैसी होनी चाहिए, यशोदा जैसी। और एक प्रेमी कैसा होना चाहिए, राधा जैसी, कृष्ण जैसी। तो हम सभी जानते हैं और हम सभी ढूंढ रहे हैं अपने अपने वात्सल्य प्रेम के लिए, अपनी यशोदा माई को, अपनी राधा रानी को और कृष्ण को। पर एक्चुअली में वो सब सेंटर्ड है, भगवान श्री कृष्ण में निहित है। हर प्रकार का रिलेशनशिप भगवान ने जी के सिखाया। तो भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम से निकम्मे हो जाएंगे, आप और भी उन्नत हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप भी जानते हैं, इवन आफ्टर यू रीच टॉप मोस्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एवरीथिंग, देन ऑल्सो यू हैव अ लिमिट। यू कांट गो बियॉन्ड लिमिट, right? You are limited in the sense you can provide medical help. You can't revive somebody who is dead. You can't. Nobody can. तो हम सभी लिमिटेड हैं और किसी ना किसी तरीके से उस परिकाष्ठा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमारा ज्ञान अनुमोदन करता है। आपके टीचर्स आपको कहते होंगे बहुत अच्छा से मेहनत करिए ताकि आप अच्छे नंबर लेके आएँ, ताकि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिले। प्लेसमेंट के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। उसी तरीके से टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली योर प्लेसमेंट बट यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वर्क ऑनेस्टली। यू शुड नॉट ओनली वर्क हार्ड, रादर यू शुड वर्क शार्प। शार्प कैसे काम करेंगे? आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपने आपको पूर्ण रूप से डिसिप्लिन करके काम करना। स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको उसके अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से डुबाना है, तभी आप सच में एक उज्जवल भविष्य का सुनहरा सपना देख सकते हैं और पा सकते हैं। भक्ति भी यही सिखाती है। भक्ति क्या सिखाती है? कैसे डिसिप्लिन लाइफ जीनी, कभी भी उठ गए कभी भी सो गए नहीं। इसलिए एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन और भक्ति दोनों साथ साथ रह सकते हैं। संबंध केवल उन लोगों से नहीं जो हमें दिखते हैं, बल्कि जो कि परा हैं, भगवान श्री कृष्ण। आप उन्हें अपने सखा रूप में अपने हमेशा साथ रख सकते हैं, उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं। You have a long list of friends, now you add on one more. Krishna as your friend. Srimati Radha Rani as your caretaker mother or a friend. हर किसी के लिए रिलेशनशिप अलग है, पर उसका सार सब एक ही चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मिले। मैं अगर इतना भी दूँ अपना एंडेवर, अपनी साइड से अगर इतना भी आई पुट माई एफर्ट्स बट आई वॉन्ट दिस मच, राइट? मैंने ये किया तो मुझे ये नहीं मिला, मैंने वो किया तो मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने सब छोड़ दिया। देन यू स्टार्ट अनदर लूप ऑफ यू नो। बट इन सब चीज़ों में क्या हम अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करते? यस और नो? रोज एक नया लूप स्टार्ट करते हैं अपने लिए। एक बात समझ लीजिए, एटर्नल रिलेशन जो है, जन्म के बाद जन्म तक जो आपके साथ रहने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। बाकी रिश्ते इस शरीर तक है।
शरीर का अंत होने के बाद सभी रिश्ते धीरे धीरे छोड़ जाते हैं ना। कोई घर तक रोता है, कोई थोड़ा आगे गली तक, कोई शमशान घाट तक, पर उसके बाद सब ठीक होने लगते हैं। ये नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो आपका जो नित्य संबंध है कृष्ण के साथ वो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप आज कृष्ण को अपना सखा, अपना भाई, अपना सुहृद, अपने पिता, अपना श्री भगवान मानते हैं तो वो रिलेशनशिप हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। जन्म के बाद जन्म होता जाएगा और रिलेशनशिप भी बढ़ता जाएगा। आप लोग भावी भविष्य हो इस देश के, इस समाज के। जब आप डिसिप्लिन होगे, जब आप लोग भक्त होगे, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। ना खुद के लिए सहन करना, ना दूसरे पे करना, ये भी एक भक्त की क्वालिटी है। जब आप कल को डॉक्टर्स बनेंगे, you will also stand strong onto your moral values because you understand things the way they are. डॉक्टर बन के सिर्फ पैसा कमाना है क्या हमें? इसलिए डॉक्टर बन रहे हैं सब? हाँ? Yes or no? Of course you will earn good. अच्छा कमाएंगे, पर साथ में आपको सर्विस एटीट्यूड भी होना चाहिए। भक्ति आपको सर्विस एटीट्यूड भी सिखाती है। संबंध ज्ञान आपको कैसे एक दूसरे की सेवा करनी है और उसके अंदर अपना सब निहित कर देना है, वो सिखाता है। सिर्फ यही माइंडसेट रखना कि डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, इट्स नॉट गुड। कर्मा, यू विल टेक कर्मास ऑल्सो, है ना? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। Conscientious efforts are very much required into medical field. भगवान के बाद अगर कोई किसी को याद करता है तो वो है डॉक्टर। ठीक है, कि आप बचा लीजिए इनका जीवन, या तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं या डॉक्टर के आगे। तो एक डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी वैल्यूज़ में कितना खरा रहना है, और वो तभी होगा जब कृष्ण आपके जीवन में सेंटर होंगे। जब आपका संबंध कृष्ण से होगा तभी आपको ये ज्ञान होगा। नहीं तो पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर आपको कुछ ना कुछ अप एंड डाउन सिखाता रहेगा। बट व्हेन यू आर फिक्स्ड इन योर रिलेशनशिप विद कृष्णा, then you will stand strong in your moral value and your duties as doctor. Hare Krishna, I stop here. Thank you for being here. May I request Shruta Kiriti Prabhu to please come on stage? Shruta Kiriti Prabhu, Hare Krishna. Mukundata Prabhu, please come. So I would like to just quickly, very shortly introduce Mukundata Prabhu. So Mukundata Prabhu is the head pujari of Iskcon Vrindavan. He has been here for many, many years. And he is, if you see the deities, you saw the deities, they are so beautiful, right? So nicely dressed. It's all the efforts goes to Mukundata Prabhu. He has been here for almost how many years, Prabhu? 30 years. He is serving Iskcon Vrindavan for 30 years. So he is basically from Europe, but he likes to stay in Vrindavan. And you see the scorching heat, but he never goes out. Most of the time he's here and he's serving the deities very nicely. So the next topic is Abhideya. So as Tirtheshwari Radhika Mataji, she spoke about Sambandha. She spoke about the relationship, right? So if there is a relationship between two people, then it's obvious that we also have to serve, right? Like an husband and wife, when they get married, and if the husband doesn't serve the wife or the wife doesn't serve the husband, that marriage is not going to last for long. Similarly, as Mataji spoke about, she's mentioned about our relationship with God, but how do you maintain that relationship? What is the main ingredient?
That in detail Mukundata Prabhu will speak. Okay? Please, I would like to welcome Mukundata Prabhu now. Hare Krishna. So, the next topic is Abhideya. The continuation of the relationship, specifically in terms of the spiritual understanding. But first of all, I would like to say one mantra. So, since we are associated to a very wonderful temple, and not only the temple, that means the Vedic culture, Vaishnav culture. So the custom is that before we speak, actually, we offer respect to our Ishtadev, to Sri Guru. And usually the process was, and even now, of course, the teachers are there who are imparting knowledge. So we are supposed to offer respect to them. So you can all repeat after me, and you fold your hands. Gurave Gaura Chandraya Radhikayai Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. So everyone understands Sanskrit? Who knows Sanskrit here? You all have learned Sanskrit? आपको संस्कृत नहीं मालूम है? आपको सीख लिया है या नहीं सीख लिया है? कुछ तो अध्ययन किया है ना तो स्कूल में संस्कृत नहीं किया है? From the maybe 6th till the 9th or something, 3 years, no Sanskrit? Yes, yes. तो हाथ उठाए किसने संस्कृत सीख लिया है? अच्छा तरह से या थोड़ा सा तो श्लोक जो मैंने उच्चारण किया अपने तो समझ लिया आपने? तो मैं बताता हूँ. गुरुवे गुरुचंद नमो नमः. हम प्रणाम करता है, नमन करता है सबसे पहले गुरुदेव को, क्योंकि गुरु की कृपा, अध्यापक की कृपा से के बिना हम आगे नहीं जा सकता है आध्यात्मिक जगत में. और वैसे ही जैसे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, तो अध्यापक की कृपा के बिना हम ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं. देख लीजिए, अगर आपके पास शायद किताबें हैं जैसे मेडिकल कॉलेज के या पहले के मैथ्स के जो भी हो, आप खरीद सकते हैं, खरीदना भी है और प्रयास भी कर सकता है खुद सीखने के लिए कुछ, लेकिन कुछ सीख सकता है लेकिन ज़्यादा ना है. लेकिन जब अध्यापक हैं उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से आप कुछ सीख सकते हैं और आगे जा सकता है ये इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी. तो गुरुजान या अध्यापक की कृपा तो चाहिए. सबसे पहले उनको प्रणाम करना है. इसके बाद इष्ट देव और कलयुग के अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु. आपने नाम सुना है चैतन्य महाप्रभु? किसने सुना है नाम चैतन्य महाप्रभु? ये कलयुग के अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने भी युग धर्म स्थापित किया है. युग धर्म मालूम है आपको क्या है? युग धर्म, अब तो सब धार्मिक है, भगवान को मानता है. कौन भगवान को मानता है? सबको. कृष्ण भगवान हो या रामचंद्र भगवान हो, किंतु कलयुग में ये जो अवतार है वास्तव में स्वयं भगवान है. युग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो वास्तव में कृष्णा है, लेकिन श्रीमती रानी का भाव एवं द्युति लेकर आया है. युग धर्म स्थापित करना है. भगवान है लेकिन भक्त रूप के रूप में है. हमको दिखाना है कि कैसे भजन करना है, कैसे ठाकुर जी की आराधना करना है. और सबसे पहले तो जैसे माता जी, तीर्थेश्वरी माता जी आपको समझाया है और बताया है कि संबंध पहले स्थापित करना है. ये पहले श्रेणी है आध्यात्मिक मार्ग में, और वास्तव में इस भौतिक जगत में भी ये संबंध तो रखता है, लेकिन इसके बाद मेंटेन भी करना है, पालन करना है.
जो संबंध जो होता है, तो संबंध तो वास्तव में सबके साथ नित्य संबंध भगवान के साथ है। तो जब अभी यहाँ पर आया है, आपने सुना है, और मेरे ख्याल से पिताजी भी माताजी बताया गया है कि हम शरीर नाय है, सुना है ना? शरीर नाय क्या है? हम क्या है? शरीर नाय है तो क्या है? आत्मा, सोल, स्पिरिट सोल। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो ये समझना चाहिए। तो उस अवस्था पर पहुंचना है, आत्मा के अवस्था पे। वी हैव टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल, आत्म तत्व। तो पहले ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन इसके बाद अनुभव करना है। तो शास्त्र के अध्ययन से, भजन करते करते, ठाकुर जी की सेवा करते हुए और गुरु की कृपा से जब उनके सानिध्य में है, तब आगे जा सकते, तब अनुभव कर सकते हैं अपना संबंध, अपना आध्यात्मिक स्थिति, जो आध्यात्मिक, जो हमारे वास्तविक स्वरूप है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, जो और इसके संबंध कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, जो भगवान है, कृष्ण और अब चंद्र भगवान। तो समझ लिया है, सुन लिया है। तो जैसे सबको मालूम है, हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, भगवान है, भगवान के साथ संबंध है, ये लगभग भारतवर्ष में सबको मालूम है। लेकिन दूसरी बात है कि हमको अनुभव करना है अपना संबंध, अनुभव करना है कि हम शरीर नहीं है अपितु आत्मा है। तो इसके लिए तो शरण भजन करना है। तो लेकिन आप तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में है, और पैसे भी और कमाने के लिए और कुछ तो करना इस भौतिक जगत में, ये ज़रूरत है, विशेष करके पुरुष के लिए, लेकिन आजकल स्त्री के लिए भी कुछ करना है। तो लेकिन भजन भी करना है, जिससे हम अपना संबंध अनुभव कर सकता है। बिना भजन तो ये अभी दिया है कि हमको कुछ करना है प्रैक्टिकल। और जैसा भी आप तो सीख रहा है जो मेडिकल फील्ड में, और ये क्या डेंटिस्ट बनाने वाला है, और क्या डेंटिस्ट, डेंटल कॉलेज है एक, तो अभी तो सीख लिया है, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? अभी मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर अभ्यास करते करते तो क्वालिफाइड हो जाता है। इसके बाद तो डॉक्टर के जो कार्य जो होता है, डेंटल डॉक्टर के कार्य आप कर सकता है, लेकिन बिना अभ्यास तो संभव नहीं है, इसलिए तो कॉलेज तो है। तो वैसे ही तो भक्ति मार्ग में भी इसलिए यहाँ पर अब आया है, मंदिर में दर्शन किया है, और लेकिन अभी भजन भी करना है, और घर पे भी सुन लिया है, ठाकुर जी को प्रणाम करना है, एक अगरबत्ती चलाना है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा करना है अपना संबंध। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आया है, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कुछ समझ लिया है, लेकिन ये और वास्तव में इसका अर्थ है, यहाँ पर मंदिर में आया है तो भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे मंदिर में कौन है, मंदिर में देख लिया दर्शन, कौन है, देख लिया कौन है वहाँ पर मंदिर में? ठाकुर जी। कौन से ठाकुर जी है, नाम तो मालूम है ना? श्री कृष्ण श्री राधा। और कौन था वहाँ पर? कृष्ण बलराम। और लास्ट में गोनीताई। गोनीताई चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार, जो वास्तव में कृष्ण के बिना है। इसके बाद नित्यानंदा, जो बलराम के बिना स्वरूप है। तो यह है कि मंदिर में आया है, और फिर भी आपको बार बार आना है, मतलब जबरदस्ती से नहीं, सो प्रेम से होता है संबंध, वास्तविक संबंध प्रेम से होता है। और वास्तव में कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन सुप्त रूप में है, और भजन करते करते धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। लेकिन इसके लिए, क्योंकि अब यहाँ पर आया है तो मालूम है कि भगवान है, तो भगवान का साक्षात दर्शन किसने किया? किसने किया है? यहाँ पर भगवान के साथ बात कर रहा है। ये तो दुर्लभ है, दुर्लभ है जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार किया और भगवान का स्वरूप अनुभव किया है। इसलिए ठाकुर जी है। और जब ठाकुर जी जब मंदिर में जाता है, कुछ आदान प्रदान होना है, ये संबंध है। सबसे पहले संबंध है, ठाकुर जी है, भगवान है, और उनके दास है। दास मतलब क्या है? सेवा भाव होना चाहिए।
लेकिन प्रेम से होता है, प्रीति से होता है। तो यह है कि इसलिए जब मंदिर जाता है अपना मन से भगवान के शरण में आना है और इसके बाद वाणी से भगवान का गुणगान करना है। जैसे श्लोक का भी उच्चारण करना है, अच्छा रहता है। जैसे मैंने बताया गया था गुरुवे गौरचंद्र, ये दूसरे बहुत सारे प्रसिद्ध श्लोक है कृष्ण के गुणगान। अब तो यहाँ पर ब्रज में है, कौन से कॉलेज ब्रज में है ना? कॉलेज कहाँ पर है? मथुरा। तो ब्रज में रहते हुए तो शायद सुना है, प्रसिद्ध श्लोक है। कस्तूरी तिलकम ललाटपाटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिदं करतले वेणुकंकणं सर्वांग हरिचंदनं सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजायते गोपाल चूड़ामणि। तो भगवान के पास पहले समझना चाहिए भगवान है और हम उनके दास है। तो कुछ सेवा भाव रखते हुए जाना है। अगर कुछ अर्पण कर सकता है, कुछ फूल या माला, कुछ फल या कुछ दान दे सकता है, ऐसे करते हुए तो आदान प्रदान होगा। अगर सिर्फ मंदिर में जाता है जाए जाए जाए, ये ठीक है, कम से कम कुछ है, जाए कर खाना ये भी कुछ है, लेकिन थोड़ा सा और करना है। जैसे घर पे संबंध है तो विशेष करके अभी मान लीजिए विवाह संस्कार तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्य जो शरीर में है विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, तो विवाह संस्कार होता है। इसके बाद तो लड़की आ जाता है ससुराल में, तो उसी समय आदान प्रदान होता है पुरुष और स्त्री के साथ, और इसके बाद सास ससुर के साथ भी। और अच्छा लगता है कि अच्छा संबंध हो, प्रेम संबंध हो, आदान प्रदान होता है। वैसे ही भगवान के साथ आदान प्रदान होता है वास्तव में, लेकिन शुरुआत में तो किया ना है। इसलिए ठाकुर जी के माध्यम से धीरे धीरे तो जो संबंध जो होता है तो पक्का हो जाता है। तो दर्शन किया है, कुछ अर्पण किया है, इसके बाद भगवान की कृपा मिल सकता है, आदान प्रदान होते। जब हम एक कदम भगवान की ओर लेता है तो वास्तव में भगवान हमारे ओर 10 कदम लेता है। उनकी इच्छा है कि हम उनके पास आवे। तो ये अभिधेय है कि हमको इसमें लीन होना चाहिए वास्तव में। तो सिर्फ 5 मिनट उठ के प्रणाम करके एक अगरबत्ती चलाना ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन जप करना है, क्योंकि युग धर्म है नाम कीर्तन। तो जप करना विशेष करके जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। बहुत सारे मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र, अब तो मालूम है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादि, ये भी भगवान के स्वरूप है। एक दृष्टि से सूर्यदेव को प्रणाम करता है, लेकिन वास्तव में जो सूर्यदेव के स्रोत कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण है या नारायण, इसलिए हम कहते हैं सूर्य नारायण और सूर्य भगवान कृष्ण सूर्य। तो ये मंत्र भी, लेकिन वास्तव में है कि ये मंत्र गुरु से प्राप्त करना है और विधिवत पूर्वक भी उच्चारण करना है, विशेष करके क्योंकि ये ब्रह्म गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि ये गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है। तो इसके लिए नियम है, जैसे ठाकुर जी सेवा करने के लिए भी स्नान करके इसके बाद तो शुद्ध वस्त्र पहनते हुए आचमन करते हुए शुद्धिकरण के लिए अलग अलग मंत्र उच्चारण करके ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। वैसे वैदिक मंत्र जो होता है जब उस अवस्था पे है, आध्यात्मिक अवस्था पे है, तब मंत्र उच्चारण कर सकते हैं अच्छा तरह से। लेकिन ये जो महामंत्र जो है ये सबके लिए है और इसके लिए ज़्यादा नियम नहीं है। और बच्चे भी और चलते हुए, प्रसाद पाते हुए, सोते हुए, बीच में भी कभी कभी जग जाता है, रात को नींद टूट जाती है और पेशाब के लिए जाना है बाथरूम में, तो उसी समय भी महामंत्र बोल सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता है। तो इसलिए तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित किया है, ये महामंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, इसके नाम दिया गया है महामंत्र। इसके माध्यम से महामंत्र उच्चारण करते हुए तो ये
हम आत्म स्वरूप भगवान के स्वरूप अनुभव कर सकते। तो मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, अब हम इस भौतिक जगत में है और अब कॉलेज में है, तो सबके पास मोबाइल है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ज़रूरत है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक जगत जाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। देखिए, आप भगवान से बात कर सकते मोबाइल से, उनका नंबर मालूम है भगवान के, उसके पास मोबाइल है नहीं, तो कैसे उनसे बात कर सकता है? गुरु की कृपा से और महामंत्र के माध्यम से जब अच्छे तरह से महामंत्र उच्चारण करता है तब भगवान प्रकट हो जाता है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। और जब अच्छे तरह से कोई भक्त महामंत्र उच्चारण करता है, भगवान का दर्शन मिल सकता है, भगवान से बात कर सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मैं अभी पूछता हूँ, मैंने पूछ लिया सबके पास मोबाइल है, आपने बोला ठीक है सब है, मुझे भी मालूम था। लेकिन ये दूसरे प्रश्न, किसके पास जपमाला है? जपमाला किसके पास है? ये तो सिर्फ दो तीन के पास है, लेकिन वास्तव में सबके पास जपमाला होना चाहिए। तो इसलिए बाद में यथासंभव अब यहाँ पर आया है तो जपमाला अगर ले सकते अच्छा होगा। या त्रिभुवनाथ से बात करूँगा, अगर कोई स्पॉन्सर मिल सकता है जिससे आप दिया, अगर ऐसे करते हुए आपको जिनके पास मतलब श्रद्धा है, जो जप करना चाहता है, तो प्रयास करेंगे कि आपको दे सकता है जपमाला। और लेकिन इसके बाद ये भी है, कभी हम पूछता है आपके पास जपमाला है, तो लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास तो है जपमाला। इसके बाद मैं पूछता हूँ तो जप कर रहा है? वो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा जप करने के लिए। मुझे मालूम है आप व्यस्त रहता है तो परीक्षा तो होता है, बहुत अध्ययन करना चाहिए आजकल। मैं तो सोचता विशेष करके जो 10th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड बहुत होमवर्क है, और दूसरी चीज़ करने के लिए समय है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। और भगवान भी सहयोग दे देंगे अगर हम प्रयास करें भजन करने के लिए, क्योंकि भजन करना ही चाहिए। हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए तो आत्मा भगवान के साथ तो संबंध है, वास्तविक संबंध है। ये स्थापित तो सुन लिया है, स्थापित करना है, तो स्थापित किया मतलब इसका अर्थ है कि हमको भजन करना ही है। और विशेष करके कलियुग महामंत्र के माध्यम से तो प्रयास करें कि आपको जपमाला देने के लिए। इसके बाद निवेदन है कि आप सब शुरू कीजिए जप करना। और जैसे ये मेरे पास जपमाला है, तो एक माला होता है, इसमें 108 ये है, तुलसी माला है, तुलसी के है, तो 108 बार एक माला होता है। तो 108 बार ये महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कि छोटे बच्चे को बताता है कम से कम एक माला जाप कीजिए। एक माला जाप कर रहा हो तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो 2 माला जाप करो जब 7-8 साल के है। ऐसा करके अब सब बड़ा हो गया है ना। कितने साल के है? 16, 17, 18, 20 के है। और कितने साल के है? लगभग 20 तो बड़े हो गया है। तो कम से कम 4 माला जाप करना है। तो ये तो लगभग 20 मिनट लगेगा, लेकिन इसका जो फल जो होता है अपार है। तो ऐसे करते हुए अब जब ऐसे करते, लेकिन ये भी जप करना ही है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा भी करना है। किसके पास ठाकुर जी है घर पे? हाथ उठाए। ठाकुर जी है? ठीक है, लगभग आधा के पास है। तो सबको भी थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए रोज रोज। ऐसा नहीं है कि पिताजी कर रहे हैं, माता जी कर रही है, हमको ज़रूरत नहीं है, नहीं। लेकिन आपके भी संबंध है कृष्ण के साथ, तो इसलिए आपको भी
कुछ करना है भगवान के लिए, कुछ फूल चलाना है और प्रणाम करके कुछ मंत्र सीख लीजिए, उच्चारण कीजिए या महामंत्र बोलिए ठाकुर जी के सामने। और हर बार तो प्रणाम करके अंदर जाते हैं, इसके बाद स्कूल जाने से पहले बाहर जाके और फिर भी वापस आके प्रणाम करना है। और जो मंत्र जो मैंने बोला है उच्चारण कर सकता है, जो जिनके पास स्मरण शक्ति है तो जल्दी सीख सकते हैं, अगर नहीं सीख सकते तो रूपवदात आपको बाद में बता सकता है। तो शुरुआत में जो मंत्र जो बोल दिया है, गुरुवे गौरचंद्राय गुरुअंगर को प्रणाम करता है। इसके बाद राधिकाया डाले ये श्रीमती रानी को और उनके सहेलियाँ गोपियाँ ललिता विशाखा इत्यादि, जैसे मंदिर में गौनीता कृष्ण राधा श्याम सुंदर है, उनके परम प्रिय सहेलियाँ जो गोपियाँ हैं ललिता विशाखा है, दूसरी गोपियाँ भी है, अष्ट सखियाँ हैं इत्यादि। तो इसके बाद कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, कृष्ण को प्रणाम करना है। कृष्ण के भक्त को तद भक्ताय, सब भक्त सिर्फ कृष्ण के भक्त को प्रणाम नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी, जैसे रामचंद्र के भक्त को, विष्णु के भक्त को, सब तो ये समभाव होना चाहिए। सब वास्तव में भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक है, तो सबको प्रणाम करना है। और जब ठाकुर जी घर पे हैं तो ये मंत्र उच्चारण करके इसके बाद कुछ सेवा करते हुए, इसके बाद प्रतिदिन थोड़ा सा भगवद गीता पढ़ना। इसके सबके पास है भगवद गीता है और पढ़ता है। कौन पढ़ता है भगवद गीता? सिर्फ एक वक्त पढ़ते, एक दो तीन। लेकिन वास्तव में जो शास्त्र जो है रोज रोज पढ़ना है। बहुत अध्ययन अब तो करता है मिडिल कॉलेज में, लेकिन भगवान के बारे में उनके आदेश उपदेश क्या है, अध्यापक क्या बताता है, ये उनके उपदेश है। तो पास करने के लिए परीक्षा, तो ये भी तो श्रवण करना है। लेकिन कृष्ण क्या कहता है ये भी हमको श्रवण करना चाहिए। इसके बाद दूसरा शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसमें दिया गया है कि कैसे साधन भजन करना है। तो समझ लिया, संबंध लेंगे, इसके बाद साधन भजन करना है। ऐसा करते हुए भगवान का स्वरूप अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है। ये अभिधेय है। तो मंदिर आके तो संपर्क में रहना है इस्कॉन में, और दर्शन लेके भगवान को कभी कभी कुछ अर्पण करना है, क्योंकि खर्च तो होता है। मोबाइल और सब, एक मोबाइल खरीदता है, इसके बाद नया मोबाइल आ जाता है, ये भी खरीदता है। कितना का है? 10, 15, 20, 30 हज़ार का है। तो भगवान के लिए कुछ खर्च भी करना तो करने ही चाहिए। सिर्फ 5 रुपये देना तो पर्याप्त नहीं है। और अपने लिए एक मोबाइल 30 हज़ार का, भगवान के लिए 5 रुपये के लिए कुछ देता है, तो उससे ज़्यादा लेना है। इसके बाद ज़्यादा भी मिलता है, क्योंकि है ना, भुक्तरंग एक तापसम सर्वलोक महेश्वरम, वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। जब उनकी सेवा कर रहा है, हमारी देखभाल करेंगे। पिताजी भी सहायता देता है, अपनी शक्ति से भी कुछ कर सकता है, पैसे कमा सकता है। लेकिन वास्तव में तो कृष्णा जब उनके शरण में है तो भजन करते करते जो भी चाहिए हम मिल सकता है। और तो इसलिए थोड़ा बहुत तो सेवा करना है ठाकुर जी को, शास्त्र के अनुसार भी है। जब मंदिर में जाता है कुछ देना है, तो मन वचन तो मंत्र उच्चारण करना है, कुछ यथाशक्ति यथाभाव अर्पण करना है। ऐसे करते हुए हम आगे जा सकता है और अपना स्वरूप वास्तव में अनुभव कर सकता है। और जब आध्यात्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक जीवन में जब सब सही होता है, तब भौतिक जीवन भी सही रहेगा। जब भजन ठीक है तब सब ठीक है वास्तव में। लेकिन जब भजन नहीं करता है तो वास्तव में अंत में तो सब व्यर्थ है वास्तव में, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है लेकिन स्थायी रूप नहीं है। और ये भौतिक जगत भी बहुत सालों के बाद इसका विनाश भी होगा। शायद आपने सुना है, कभी कभी प्रकट हो जाता है। गर्भवता कि शायद विष्णु भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार रूप है, नहीं महाविष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। एक सांस जब निकलता है, जब अंदर लेता है तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो और वास्तव में अब ये हमारे वास्तविक जगन्नाथ है। दूसरा नाम भी इस जगत के दुर्गा देवी है, उस जगत का नाम भी दुर्गा है।
दुर्ग का मतलब क्या है आपको मालूम है? जेल, प्रिजन। प्रिजन तो वहाँ पर रहने ठीक नहीं है ना। तो लेकिन ये बहिर्मुख होकर भगवान से एक तरह से जेल में रहता है, तो इसलिए इससे निकलना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना ही पड़ेगा। इसके बाद आध्यात्मिक जगत जा सकता है जो, और वहाँ पर वास्तविक अपना जो नित्य संबंध कृष्ण के साथ है और ये सनातन जीवन है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के लिए हमको प्रयास करना है। ये अभिधेय कहलाता है। इसके बाद उत्तम अवस्था प्रयोजन, जब प्रेम प्रकट हो जाता है, लेकिन इसके बारे में अगले बार बताएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू मुकुंद प्रभु। बात भगवान से कैसे संबंध जोड़ना है, कैसे संबंध जोड़ना है? भक्ति के माध्यम से, सर्विस, है ना। और भगवान से भक्ति जोड़ने में सबसे आसान तरीका क्या है? मुकुंद प्रभु ने वो भी बताया। सबसे आसान तरीका है महामंत्र जपना। तो इस्कॉन के सब भक्त लोग जो दीक्षित है वो 16 माला जपते हैं सुबह, और फिर भगवान के विविध तरीके सेवा होता है। तो कोई अर्च विग्रह करता है, कोई किचन में सेवा करता है, कोई फूल माला बनाता है। तो ऐसा अलग अलग तरीका सेवा है। तो सेवा करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है भगवान से संबंध जोड़ने का, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। तो जो माला जपते नहीं हैं वो रोज़ एक माला जपने का प्रयास कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा भी माला जप सकते हो, उसको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम एक माला जपने का आप सब लोग प्रयास करो तो अच्छा रहेगा। और जैसे मुकुंद प्रभु ने बताया, दूसरा एक बताया बुक्स, जो यहाँ पे इस्कॉन प्रभुपाद जी ने काफ़ी किताबें लिखी है और हमारे लिए लिखी है, ताकि हम भगवान को समझ सके, हमारा क्या संबंध है उनके साथ समझ सके। तो आप लोग जब ये प्रोग्राम के बाद घर जाओगे तो पीछे एक बुक स्टॉल लगा हुआ है, आपको अगर चाहिए तो आप एक बुक ले सकते हो। छोटी भी बुक्स भी है, भगवत गीता भी है, तो कई अलग अलग तरीके की बुक्स है। तो आप जैसा आपको ठीक लगता है, उचित लगता है, आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। और अभी हरी बोल रेडी, ओके। तो अभी तीसरा टॉपिक है कृष्ण महाप्रसाद। तो इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम बिना प्रसाद का एंड नहीं होता है। तो आप मंदिर में भी देखोगे महाप्रसाद मिलता है, और प्रोग्राम होने के बाद अधिकतर जब भी प्रोग्राम होता है प्रोग्राम के बाद प्रसाद वितरण होता है। तो इस्कॉन का एक मुख्य अंग है वो प्रोग्राम का प्रसाद। अभी चैतन्य रूपिणी माता जी हमको बताएंगे कृष्ण महाप्रसाद का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है माता जी प्लीज़। Hare Krishna. I welcome you all to this wonderful program. The topic is here, like how you are going to connect with the Krishna consciousness, or those who are already in Krishna consciousness, to be in Krishna consciousness, continue to be in Krishna consciousness. So first of all, I appreciate all of you, the students, the professors, everybody taking all the pains to come over in this scorching heat. I can invite them to come here. So, first of all, let me welcome. Prabhuji says that all the dignitaries, Dr. Munish Kumar, Ajmeri Khan, the Paramedical Nursing College, and Dr. Vivek, along with Rupali Mataji. And then they are from Dental College. And I also welcome Dr. Veena and Mr. Rawat. Please come on the dais. So,
Please be seated here. Please come. So, it is really very appreciative of all of you coming over, taking all the strains to come over to Krishna Balaram temple. And one or the other way, by the way of study itself, you can say you are staying in Braj. That means Brajvas. You are doing Brajvas. Many of you may be staying in hostel, or some of you may be having in your house also, like Mathura, they may be, some are in Vrindavan, whatever it is, but all are doing Brajvas. This is very important, this is very nice, and you are most fortunate to be in Vrindavan. As long as your study goes, you will be in Vrindavan or in Mathura, whatever it is Braj only. So, you are all very fortunate to be here in Braj. So, my topic is like Krishna Prasadam. The first Krishna Prasadam is, what is Prasadam? The meaning of Prasadam. The Prasadam means it is the mercy. Here if I say that it is Krishna Prasadam, that is Lord Supreme, Lord Krishna's supreme mercy we are taking. The moment we say Prasadam, the thing is that we think of eatables, foodstuff, you can say. Prasadam means the immediate that will come to your mind. Something to eat, isn't it? And you may be all feeling hungry also. You will get prasadam definitely. So that is the Krishna Prasadam. That is the effect. That itself will make you like, okay, anyway, we will listen to the lecture. At least we are going to get the good, nice prasadam. And it has been arranged also by the temple. So that is true. And then the other thing like Krishna Prasadam comes, so many things come under this category. Like suppose, like Pujari is doing arati in the temple. We put incense sticks while doing the arati. We take incense and then ghee lamp is offered, water is offered, flowers are offered. So everything after offering to Lords, that will become prasadam. So whenever the arati comes, we take it like this. All of you may be knowing, it is a common thing. So whatever arati comes, that is a prasadam. And sometimes we get the garlands also, isn't it? For Krishna's garlands, Gaurnitai garlands, or Radha Shyam Sundar garlands we get. So that is also prasadi mala. So that is Krishna Prasad, and Krishna is showing your mercy in the form of garland, in the form of incense, or in the form of ghee lamp, or whatever it is. All are Krishna's mercy only. When it is Krishna's mercy, it is not ordinary thing. It is totally transcendental. That is spiritual. Earlier, it is an ordinary flower, ordinary ghee lamp, or something, any food stuff you can say. But when it is offered to Krishna, that whole thing will be, the scenario will be changed. That will become like transcendental, everything. So that is why we value them. And you may be hearing like we in Krishna consciousness, we don't say that we are eating prasadam. We don't say like. We say that we are honoring Krishna Prasadam. It is not an ordinary thing. We are honoring because Krishna has shown his mercy in the form of prasadam. So we say that we are honoring Krishna Prasadam. Maybe a cake, maybe a pastry, maybe a foodstuff, simple dal, roti, chapati, whatever it is, everything is Krishna's mercy. And they are non-different from Krishna. That is a very important thing, that it is non-different from Krishna. That is why we say that we have to eat it completely, maybe as far as possible. We have to eat it. Then, suppose a building construction is there. A building is, you are going to construct a house, for example, say, and you need raw material, isn't it? Bricks, steel, cement, everything. And you provide the mason all these things. Or whoever is, you can say contractor, whoever is there, you will provide. You will provide him by money, you will get the things, and he will build you a house. After building the house, he cannot say that it is my house, because you have paid for his labor also, isn't it?
whatever the time, every day, maybe monthly basis or day basis, whatever it is, you have paid him the labor charges also. He cannot claim that it is my house. Isn't it? It is your house. Because you are the raw material giver. Whatever the necessities were there, they are given by you. That is your house. Only thing he has constructed. Here the same thing, Krishna is the provider of all the raw materials we need. Have you created air? Any one of us, can you create air? No. Can you create water? No. All the things which are available in nature are created by Krishna only. Because he is the reason for all the reasons. That is our shloka. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. He is reason for all the reasons. Whatever you take any metal or you take any other thing, substance like say potassium, magnesium, aluminium, carbon, whatever it is, whichever you take any metal, this has come, you can say that we will go there and we will extract that metal and some purificatory processes and then we get the metal, even including gold also, gold, silver, whatever it is. But the main thing is that has been provided by Krishna only. Nothing is like that. Suppose a pen is there, we don't know how it has been manufactured in the factory. But definitely one thing we can say that it has been created by somebody. Isn't it? Will you agree with me? We don't know who has created and how it has been created. But without any doubt, we can say that it has been created by somebody. Similarly, whatever the things we see in the nature, be it a sun, moon, innumerable stars, all these plants, trees, big trees, small trees, oceans, big oceans, rivers, all the mountains, peaks, springs, everything. Have you created? Human being can create? No. Not possible for us to make all these things. He is the supreme one, and some people may say that they are existing in the nature. Many people argue that they are existing in nature, but nature is not independent. It cannot do on its own. It completely under the observation and under the guidance of Krishna, she provides us everything. It is not that on her own she can create, the Prakriti can create. No. Although she can create, but under the guidance of Krishna only all these things are provided to us. So that is why whatever we eat, we have to offer it to Krishna as a bhoga, then it will become prasadam. When we offer anything with love and devotion, that becomes prasadam. When Krishna has, and the way Krishna eats the prasadam is also, it is out of our consciousness, our mind. Krishna, all the senses, one sense can act for other sense also. Like one, we hear from our ears only, we smell with our nose, like we have particular things to be done by particular senses. But Krishna's senses are transcendental. He can just glance at the food, that means he has taken the prasadam. No need that literally he has to put his hand and put in his mouth. No, he can just glance at the prasadam you put there, the bhoga, then that is, he can eat just by looking at it. Or sometimes it is, why the prasadam is so important is when we offer it to Krishna, the transcendental. Because his transcendental lips touch that foodstuff, what we made with the love and devotion, then that becomes totally spiritual and good for us. Then we are, like morning we had a one meditation, Prabhupada meditation, every morning we did. There Prabhupada says, eating by eating and by eating and by eating the Krishna Prasadam, you get infected. Suppose if you go to an infected area, like coronavirus was there, so some patients are there totally coronas. That ward is full of the patients. If you go there, there are chances you will get infected, isn't it? Like Krishna Prasad
is something like that which is Krishna infected. Got it? It is Krishna infected. It is going to bring some change in you because it has such a tremendous strength, energy. It is unbelievable. That is why our Prabhupada made it, those whoever visit the temple will get Khichdi Prasadam here. Krishna Prasadam here. So which is been offered to Krishna and then become Prasadam, and everybody is given the Krishna Prasadam. So Prabhupada started this mission also. And then what Krishna wants, Krishna himself tells in Bhagavad Gita. What can we offer to Krishna? He says that Patram pushpam phalam thoyam yome bhaktya prayachati tadaham parat ashnami prayatatmanaha. That means Patram means tulsi leaves, you can say. Pushpam, here it is, everything is single. You need not to make like heaps of flowers, heaps of fruits, nothing. Krishna gave us very simple thing which a very poor man also can offer. Just one tulsi leaf and one flower and one small little of quantity of water. Patram, pushpam, phalam, fruit and jal, water. This you can offer it to Krishna. It is very simple. Anybody can do this. This is the practical application where you can put this. Anybody can do it. Even a student who is staying in the hostel can have as a photo and then you can offer some water to Krishna. Isn't it easy? Not that difficult. And the water that becomes prasadam. Then you mix with other water, you can eat it. Like we offer prasadam in this way only. Whatever is prepared by chapati, rice, dal, whatever. With the tulsi leaves, we offer it to Krishna and we recite some mantras. And then after we close the curtain, let Krishna can eat it. And then after 15 minutes, again we ring the bell and we take it out. And that becomes prasadam. So, in Krishna in Bhagavad Gita, there is one more verse where Krishna says, like, if we eat other food other than that of prasad, like most of us being in hostel, you are eating, isn't it? Because that is a practical, it is not possible for you now. Some are in the hostel and it is not possible for you to do all these things. But I can say practically what Krishna says and how it can be applied in your life. So that it becomes easy for you to follow this. Like Krishna says, Yajnashishtassinas santo muchante salva kirbilshahi bhunjate te togam prapa e pachante atma karanat. The shloka means that the devotees, Krishna's devotees, eat Krishna Prasadam. That is why they are released of all their sins. And for the people, those who are making food stuff for their sense enjoyment, are eating the sins. This is the query between Arjuna and Krishna. When Arjuna asked the question to Krishna, it is in the 3rd chapter of Bhagavad Gita, that is called Karma Yoga. Krishna asked him, Arjuna asked him, like, why you are making me engaged in the ghastly war? I am not interested to do this. But why you are engaging me in this war? And if you are thinking like, am I capable or is it even order? Then Krishna starts answering in the while that whatever the shloka I quoted, that comes. For devotees, we have this advantage because we are eating the Krishna Prasadam. You will be released with all the sins because we do lot of sins. That is a human tendency. Even though sometimes if we don't want to do also, sometimes we are forced to do this because of our gunas, 3 modes of life. That is mode of goodness, passion and ignorance. Because of that we do the karmas which are not approved by the you can say Vedas or Shastra. We are not supposed to do, but we do it. And the food stuff also, they say that all the 3 modes people, they have what kind of food is
good for them or what kind of food they like it. Like the food which is means very good for them is like those who are in goodness. They eat sattvic food, you can say, and that food is juicy, good, healthy, nutritious, and it gives strength, and it is means no diseases for this. Those who are in goodness. And those who are in passion, they like to have food which is very hot, very bitter, very sour, and dry, pungent, and something like that. That kind of food is liked by the people who are in passion. And ignorance, that is the food prepared other than that, other than whatever it is, whatever is being offered, like prepared, for example, you can say more than 3 hours, except Krishna Prasadam, and it is stale, and it is decomposed, and get into lot of problems. These are for the people who are, for those who are in ignorance. So mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. These foodstuffs are liked by these people. In then there is like if you satisfy Krishna with whatever activities, devotees we do, not only this one, we do all the Navada Bhakti. You can say some are engaged in some other activities like Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanimenam. So you can understand, I think, it is in Sanskrit. So many people are doing Kirtan. Some are engaged in cooking and some are engaged in making flower garments, some are in Rangoli. Everything comes as a Krishna service only. Whatever process you applied here, whatever you want to please Krishna, that is a service. Not anybody else. Only Supreme Lord Krishna. Whatever you are doing, all this comes under this category only. You are doing service to Krishna. And just one small story. And Krishna, the Pandavas were in exile. For after that dice game, they were in exile, and that time Suradev provided one Akshay Patra to Draupadi. So that so many saints, people will be coming, saint, so they can provide us the food stuff, the prasadam to all these saints. So that Akshay Patra had one rule also. That means like Draupadi has to eat last after feeding all the brahmanas or saint or whoever is coming, and for husbands also, and later she has to eat, and if she washes and the Akshay Patra and keeps it upside down, after that the Patra will not be giving any food stuff. That was the rule. This was known to Kauravas. So what they do is they send Durvasa Muni. Durvasa Muni, whenever we quote Durvasa Muni, a very angry person with lots of disciples, thousands of disciples. And Duryodhan very well knew that by this time Draupadi might have taken her lunch. So he sent Durvasa Muni at that time so that it will be very difficult for them and the Durvasa Muni is going to curse them. On this intention he sends them. So he goes there and they went, they take bath in the river. By that time Draupadi has cleaned the pot and she kept it upside down. When she came to know that Durvasa is coming, so she started praying Krishna, because he is the one who can protect you all the time. He is friend, guide, philosopher, father, mother, sister. He can be anything to you. So she started praying, Bhagavan Krishna, you please help me now what to do. He is coming with the thousands of disciples. Then Krishna came and he asked, any morsel is left in the pot? Just see. She went and she just saw the spinach attached to one of the corner which was left. And she said that this is the only piece left. Krishna, I am sorry. You are asking and I am unable to do this. Only accept this leaf. I don't have anything to offer you. And Krishna eats that morsel. That's all. Krishna is fully satisfied. And the same time, Durvasa and his team, everybody is total full up to neck, as if they have eaten lots of prasadam. The neck was filled, and out of embarrassment, they all ran away.
Because they could not have face to come here and eat again, so all of them, they ran away. So if Krishna is satisfied, so no need to satisfy anybody else in the world or any demigods, anybody. So if the water is put in the roots, it reaches to all the stems and the roots and the stem and the leaves and the flowers and the fruits everywhere. So Krishna is like that. If you please Krishna, and all the demigods are satisfied by themselves. So I take a leave from this. I hope I made the point clear. And some practical application, later we can discuss like how you can apply and make prasadam or offer it to Krishna. I know you are in hostel, some of you, and it is difficult for you to follow all the things. But there is a method also, with that you can do it. Thank you so much. Thank you, Mataji. So next we would like to invite Shruta Kiriti Prabhu. So I'll just take 1 minute before he starts talking. Shruta Kiriti Prabhu is a very senior disciple of Srila Prabhupada. So everyone knows who is Srila Prabhupada? He is the founder Acharya who actually started Iskcon. So Shruta Kiriti Prabhu completed 50 years of service to Srila Prabhupada. So he has been Prabhupada's servant for long years, and now he is going to come and talk about the next topic. And then the next topic is necessity. So I would welcome Shruta Kirti Prabhu to come and enlighten us. Thank you. For what? The podium is. Hare Krishna. Very wonderful to see all of you here in Vrindavan today. As Sri Rampanda Prabhu said, I met the devotees in Philadelphia back in 1971. It was 51 years ago. How many of you here are like 19, 20 years old? Anyone? 19-year-old older? 19, 20, 20s, 21, 22? Yes? So I was in college, university, studying religion, also studying business, marketing, because, don't look at your watch now. We're talking, my goal was necessity. What is our necessity? So, like you, I was in the university. I wasn't so well. I wasn't IT. I wasn't studying Ayurveda or medicine. So many wonderful things that you're doing. But that question everything. Why am I doing this? How many of you here accept reincarnation, transmigration of the soul? After this body, how many of you think there will be another body? No? Just 3, 4, 5? Let me see. You're all living here in India, the place where everyone knows reincarnation is there. Okay? I came from the United States. We didn't hear about these things. I was raised in Catholic religion. Our understanding was I was born. When I was born in this body 70 years ago, that's when beginning of my life, the beginning of my spirit soul. And then depending you're good, you go to heaven forever. If you're bad, you go to hell forever. This doesn't make a lot of sense, you know. Again, raised in as a Christian, Christ, Mataji was talking about prasadam. See, we used to get prasadam every Sunday in church. This little bitty piece of unleavened bread. But if you go back in Christianity, what did Christ have with his disciples? He had a big meal. We learned about the Last Supper, it was called. He gave them bread, gave them wine, gave them food. This is what we do in Krishna consciousness. Everything we offer to Krishna. The same concept was there in Christianity, but after
thousands of years, everything diluted. We have, back there at that table, you'll see a number of books by Srila Prabhupada. He translated into English over 60 books from Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, different Vedic scriptures, Sri Supanishad. So you'll see we have to tell them when to stop speaking. Just like you're being trained up as physicians, doctors, whatever it is. We were trained up by Prabhupada as preachers. But once we start talking, it's very hard to get us to stop. We can go on and on because, again, 50 years. And I did as all you were doing. I joined in 71, and I lived under the temple for a dozen years. Then all of a sudden I realized I had a wife and 3 children, and I had to maintain. For 20 years, I had a very normal job in America. In America, a normal job, you're connected with cars. That's what I was connected with. But never forgot the real necessity of life. Huh? How much effort you're putting into to just deal with this one lifetime, just so you can survive, huh? Just so you can eat, have a nice place to live, transportation. But what's the real necessity? Necessity is you have this human form of life, and that life, everything else you do, fine. Prabhupada told us, whatever money you'll get in this life, it's already predetermined by your last life. You can't change it, no matter how good you are, no matter how hard you work. Whatever is going to come materially, it's already set. What you're doing in this life, you're setting up what happens in the next life. Huh? So what's the most important thing you can do? It's to understand the purpose of this human form of life. I talked about how we like to speak. Prabhupada said, what can you tell? Because we've distributed millions and millions of Prabhupada's books. In 1 year, millions of Prabhupada's books. Why? Prabhupada said, what can I say to you 5 minutes, 10 minutes that's going to make you think what to do in this life? He said, but if you take a book, you give someone a book, these aren't ordinary books. He said, Krishna is in every word. He said, so you give someone a book. He said, just by their taking the book, they've already made advancement in Krishna consciousness. They've already guaranteed a better situation in their next life. So, Tribhuvanath Prabhu, everyone here, they want to see that besides all your university, education, so many things, you understand what the real purpose of this life is, huh? Not that you can't have your job. I had a job for 20 years, but due to training beforehand, I never forgot what I needed to do ultimately. We say, Prabhupada said, this place, this temple, is his home. Why is it his home? He said that to us. Vrindavan is my home. Because this is Krishna's home. We all belong to Krishna. It took me a very long time. As I said, I'm 71 in a month. And I lived in the US many, many years. I was born there, raised there. But I finally realized this is my home because it's Prabhupada's home. I'm his disciple. But it's my home because it's Krishna's home. We all belong to Krishna. It's not just a few get some special facility. You're all here now. And you're being here. Krishna is never going to let you go. That's one thing you need to understand as the years go by. You can try very hard, reading, chanting, taking prasadam, or you could try to forget all about it so you can make crores and crores of rupees. But now that Krishna has hold of you, huh? What do we say Krishna? He's crooked.
His form is crooked, threefold bending form. His hair is crooked. He has wavy hair. But also, he deals with you. He's a little crooked. Prabhupada told me, he said to the devotees, the pure devotee, is he simple or crooked? And all his disciples were there. This is, of course, a long time ago. And we know one of the first things, qualities of a devotee. He's simple, humble, quiet, all these wonderful. So one devotee, Prabhupada, he's simple. He said, no, he's crooked. He said, I've tricked all of you. Imagine us Westerners. He turned us into Vaishnavas. We didn't know what we were getting into. But we did get to see devotees in those times. In the newspapers in the US, they would say, they called the Hare Krishnas bright-faced. Most people aren't bright-faced. But they would see us chanting, distributing books, and we were always looked happy. Because we're connected. This is the necessity. You can connect in so many ways. Outside, in your office, with your friends. But what the devotees here want you to do is understand you're eternally connected to Krishna. He's the Father, Aham Sarvasya Prabhavo, Atasaram Pravatite. It's the source of everything. Here in Vrindavan, we distribute 7,000 cups of khichdi every day. Why are all these people coming here? To take that prasadam, to see the deities, to hear. Here we have Bhagavad Gita class in the evening, Srimad Bhagavatam class, Hindi here, English there. This is the importance in life, reading. And if you don't do anything, Prabhupada said these books are like deities. So even you put Bhagavad Gita as it is in your house, even you don't read it, you have Krishna personally there, his words, the words of the pure devotee, the words of the Supreme Personality of Godhead. And that will give you blessings. That will give you blessings so that your life can be very nice and peaceful. We've come to a state now, no one knows, the future is very precarious, I mean, literally very precarious. Prabhupada told us back in 1973, he said 50 years, everything finished. Your civilization finished. You cannot go on killing cows, killing babies in the womb, killing, and expect you're going to have a nice, pious, wonderful life. And we're seeing the results of that more and more. So what we ask is everyone, you just chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I was looking, long time ago, 19, I was in college, what am I doing this for? So I can be like my parents? Just working, so you can have nice house, bigger house, new car every 3 years. Here we circumambulate the temple. When I was a child, someone in the neighborhood got a new car, we would circumambulate the car. Ooh, so beautiful, so beautiful. 3 years later, have to buy a new car. It's no longer beautiful. That's the material world. But you look at all these people, doesn't matter, 30, 40, 50, 60, they're beautiful. They carry Krishna, They carry the pure devotee. So all we're asking is whatever else you do, don't forget the opportunity that Krishna and the spiritual master are giving all of you. Our business is stay in touch. Prabhupada started this whole society through love and trust. We say in Iskcon, everything is based on love and trust. We don't say trust and love. First, you have to see person cares, that he really cares, doesn't want anything. That's pure devotee, no material desires.
is he said, I was with Prabhupada for 2.5 years, cooking and massaging, answering a bell. I was personal servant. When I'm in the West traveling, the devotees, they introduce me. He was Prabhupada's secretary. He was Prabhupada's PA, personal assistant. I say, no, I was a servant. No one wants to be servant. That's why we're studying, so we can have servants. Huh? In America, no one, you've got to be very, very wealthy to have a servant, a driver. You know, Prabhupada said when he first came, 1966, 67, he was telling his disciples, yes, he said, I had car, and I would sit in the back of the car and go here and there, and they're thinking, how could he sit in the back of a car? But we thought he was Prabhupada, that he had like flying carpet kind, like he could just drive the car from the back. But he had a servant. You're used to that here. Imagine, he comes and tells us, your servant. That's us, servant to Krishna. But what is the result? We have Krishna book back there. The result is we want next life to be with Krishna eternally, with the gopis and the gopas, as all his friends, his parents. When I met the devotees, I didn't even want to speak with them. I was Western. I had my hair was out like this, I had a beard. And my friend said, we were both searching. I wasn't searching philosophically. I wanted to feel God. I said, if you're there, let me experience you. And in the West, there was no chanting. None of this was going on that I knew. But I went to Christian revival, we call born-again Christians. Mostly they were dark-colored people, black. But they would dance and sing and chant. And I thought, that's what I want. They must be with God. But it didn't work for me. I went to a few of these, but I never, the Holy Spirit, they called it in Christianity. We call him Paramatma. Huh? Same thing. But I didn't feel it. It was Earth Day, 1971, April 22nd. My friend and I were at a big park. Local bands were playing rock music. But down in the valley, there were a dozen of these people dressed like this, shaved heads, men with bald heads, big white chandan, tilak on their foreheads, singing and dancing. And my friend said, let's go see them. And I went, he said, come on, they're okay. I said, they look like they're from Mars. He said, no, let's go talk to them. So finally we went, and I wanted answers. They had answers for everything. They not only told me who God was, they told me his name, his mother's name, father's names, brothers, sisters. I'm thinking, geez, they explained it all to me. And it was all coming from Prabhupada's Krishna book. I shaved my head, moved into the temple 3 days later, both my friend and I. We just left college, never looked back. 12 years later, somehow or other, I was back in my hometown, had to survive. I was able to start a business. I did very well. I did okay for 20 years. I didn't have a college degree, but I saw Krishna takes care of everything. So somehow you try to see, you give a little something to Krishna. You're all so fortunate in here. You all understand, you have a Tulsi plant in your home. You can just water Tulsi every day, go around, chant a little bit. You're all blessed. I didn't have that blessing. I grew up, Prabhupada would say, we were all malechas. But this philosophy is perfect. You take it to heart and you associate. Just like if you want to become a doctor, you have to associate with doctors. You have to hear from professionals. So if you want to ensure that your next life is better than this one, then you associate with the pure devotees. You associate with the devotees
who are in touch. You saw Mukunda Dutt. He spoke here in Hindi. He speaks maybe 6 languages. I don't know, Hindi, English, French, Bengali, a little bit of Sanskrit, and probably something else. Many devotees like him. So we say, someone speaks 2 languages. What do you call them? Bilingual. Huh? 3 languages. Trilingual. 1 language. An American. They only speak English. That's me. Us Americans, we didn't think we had to learn anything else. Now I see the necessity. Huh? Learning from the proper authorities. So you've all been sitting here very patiently for the last 2 hours, and I'm getting the hook here. I'm your last speaker, fortunately. You're all going to get this very wonderful prasadam soon. We say, take it to your full satisfaction. Prabhupada told George Harrison, kept forcing him, take prasadam, take prasadam. He's eating pakoras, cauliflower pakoras, samosas, puris, halava. Prabhupada said, take more. No, Prabhupada, I'm full. Prabhupada said, prasadam can never hurt you. Yes, Prabhupada. He kept taking. And Prabhupada knew us in the West. Give them lots of prasadam. Because that purifies us to where we can understand these topics that are being spoken. So I think I should stop here. And there's so many things I did want to say, but just if you can, you please take one of these deities into your house and you read it sometimes, and it will change your life very, very favorably. Okay? So, yeah, we have little books. We have a Bhagavad Gita as it is, but there's also smaller books. Any of them. It's not back there. I also wrote something, My Time with Srila Prabhupada, which again, I got to see Prabhupada with genuine guru. No secrets. There was no behind closed doors. Not a half a dozen female secretaries. Prabhupada was the real, we say in him, the real deal. He comes in the disciplic succession from Krishna through succession of pure devotees. So what he writes is coming from pure devotion, and it's coming from Krishna. So, thank you all again for all being here, and Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Yes? We just want to... Yes. Thank you, Shruta. If you're happy, just say Hari Bol. Wow, I'm not say Hari Bol. They said if anything is worth doing at all, it should be worth doing well. So I want to start my appreciation, vote of thanks, by first of all acknowledging Dr. Munesh, thank you. Dr. Vivek, thank you. And Dr. Vinna, thank you. Thank you. Then a big thanks to our Father of the Day, His Grace, Kiriti, Prabhu ki. So, and a big thanks to you all. A big Haribo to you all. Hari! Hari! So without more time, so we are going to go through this way for... So it's already waiting. So he's already waiting, right? So we are going to take it systematically. Some we take through this way, and some we take through this way. Okay? Somebody will lead like this, and some will lead like this. Okay? And don't forget, the books, small books are there. The books, they have wonderful caption. Perfect question, perfect answer.
the laws of nature. What you sow is what you reap. What goes around comes around. Life comes from life, not from matter. So we have so many wonderful captions at the back. So it all depends on your choice. If you are inspired, please don't give offside. The books are there. Clap for yourself. Hari! So thank you. We don't want to forget this. We want to find out from the distinguished representative of each school if they have any comments, any whatever. Please, at least lead you thing. Either we have Ena, Manej, whatever comments you are. Please. At least one comment, something.